Nitesh, how are you? Yes, I am fine, sir. Okay, that's great. So tell me something about you in brief, Nitesh. Sure, sir. Uh, Good afternoon, sir. I'm Nitesh Pemawat. I am from Jaipur, Rajasthan. Currently, I'm pursuing a BTech from Tikandi Institute of Technical Studies in CSE. I choose this domain because since from my childhood days, I have interest in computers and technologies. So for further interest, I choose the BTech. In the BTech specifically, I choose the web development domain, where I learned and created some projects. Few of them were selected. I created multiple major and minor projects. The major two projects. One of them cleared the internal hackathon of our college, and the another one secured the third position in the Starter University Hackathon held in 2022. Also, I did an internship in the web development field for about approximately 3 months, where I learned about the UI UX and how to make a website more interesting so that to enhance the user experience on the websites. Going to a non-technical part, I'm fond in playing guitar. I'm a traveler. I used to travel a lot. Also, I like to a little bit of cooking. Uh, I'm also an active member of Innovation Club and the Explorer Club, and also participates in the events led by them. That's all from my side. You are active member of what? Sir, Explorer Club and the Innovation Club. Explorer Club and Innovations Club. Oh, what basically the role of Innovation Club? What do you do in Innovation? So in Innovation Club, we try to create something innovative which will help the people in the daily in their daily life. Okay. So is there any kind of innovation you have done yes, in your sir. Innovation Club as of now? Yes, sir. I created a project which is my first project also. It's a major project which I also participate in the idea thing with that project, which is actually the QR code based pharmaceutical system, where we use the QR code in the front side of the medicine to reduce the chances of the wearing and tearing of the expiry date from the backside of the medicine, and use it. And also I added some features like translation and text to speech, so that the old age people also use that project. So the main aim was to reduce the consumption of expired medicine and to decrease the goods that are used to make the medicine. So that was my last innovation. Good. That's good. So what is your percentage in 10th, 12th and graduation as of now? So my current aggregate is 9.1. I scored in my 10th class, I scored 7.6 SGPA. And in my 12th class, I scored 62.60 percentage. Why there is a drop in percentage from 10 to 12th and again it is again up? Sir, actually in 11th and 12th, I joined Ascent International, which is an JEE Mains and the Advanced Institute, where we focus on the JEE thing. But I majorly focus on the JEE part, but not on the 12th boards part. So in the core subjects, I scored decently. Like physics, I scored approximately 75%. But in the subjects like Hindi and all, so those subjects degrade my marks. So in your opinion, if somebody is preparing for JEE, they score less in 12th. Am I right? No, sir. Actually, my main focus was not on those subjects. So the Hindi and English subjects degrade. So what rank you have got in the JEE? Sir, I didn't remember my rank as of right now, but it is not as that good. So what is your dream now, Nitesh? Where you want to go? At what level you want to reach? Sir, as I said, sir, I did an coaching for JEE.
I didn't achieve that goal. So my next goal is to achieve a better company from which also suits which gives me growth. Let me test my potential, what I have, what I can go with my learning. That's it. First That's goal you my have not current. achieved. The second will be go in the Yes. same way, or you will achieve the second goal. No, sir. No, sir. I learned from my first goal with Is all there the any kind of drawbacks I dream have. job or anything No, good sir. I job didn't drop, sir. you have thought about that I want to go in that company only? That is my Yes, sir. interest area. So where do you want to Yes, go? sir. My dream company is Infosys, Wipro, and Accenture. So mainly, my dream company is Infosys. My elder sister is also in Infosys, so I saw the work culture and the Mysore Elder campus where sister the is all in the. Infosys, right? Yes, yes, sir. Currently, she switched the job, but she first joined as an Infosys system engineer. So She I was saw also her. the student of Gitanjali. No, sir. She is the student of Techno India. Okay. So she has got passed out in which year? Sir, in 2019. 2019. So why you have not went to Techno? Why you came to Gitanjali? Sir, actually, when my sister is studying in the Techno, she told me that in the second or third year, the most of the best faculty change their college. So she told me that do not join Techno for computer science. The That's why I changed faculty my mind. issues. Yes, he has felt, Yes, right? Okay, Nitesh, nice talking to you. Over to our one of the most respected expert, Arun Sinal sir. So, thank you, Arvindji. You can hear me, right, Nitesh? yes, sir. Okay, good. So, Nitesh, I partly heard what you said to Arvindji. So, tell me, what do you want to become when you pass out of Gitanjali? Sir, as of now, I want to become a front-end developer. Uh, uh, I can, sir, I want to go a position where I can fulfill my dreams as a work culture, which leads to be a better myself, Hmm. So, which increase my potential. Yes. right. So, you want to become from passing out, you want to join a job as a front-end developer. So, what is the Yes. work of a front-end developer? So the work of front-end developer is to make a website look good, to increase the experience of the user, and to make the things accessible to all the users, so that if an unknown person who is not known to a current trend, he can also access the website as the same way he did on the older one. Right. So, what is the most important work of the front-end developer? The most important one works is to view things clearly, the clarity, the colors, such that the user can relate with the work. Just like, sir, if we go, yes. So what you know what you said? The most important job of the front end is to view the colors. Is that the Yes, job sir. of the front end developer to view the No, colors? sir. No, Then sir. what It's is the not the most view the color, important work of a front end developer? sir, to represent things briefly. Sir, if we work on the dynamic part of the website, we have to write the programs on the JavaScript. अच्छा, तुमने कभी फ्रंट एंड डेवलपर का जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा है? सर पढ़ा है सर, क्या पढ़ा है इंटर्नशिप्स बताओ? के लिए सर एक वेबसाइट को एक अच्छा रेस्पॉन्सिबल बनाना है, एपीआईज के साथ उसको यूज करना आना चाहिए, डिफरेंट रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, एपीआई एक्सेसिबल होनी चाहिए, और ना यूआई और यूएक्स ना यूजर का अच्छा जाना चाहिए इन दैट, और जितना भी फंक्शनलिटीज उसके अंदर ऐड करो वो अच्छे से काम करनी चाहिए। बस सर यही फ्रंट एंड डेवलपर को क्या आना चाहिए? सर फ्रंट एंड डेवलपर को सर बेसिक्स सर एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट तो आनी ही चाहिए। वो तो बेसिक होता है, वो वेब 1.0 का। तो उसके बाद में अब अगर देखा जाए तो जो नीड है वो रिएक्ट जेएस की है। सो अपन को अगर रिएक्ट जेएस आती है तो सर अपन सिंगल पेज वेबसाइट्स अपन है ना वो बेटर है आज के टाइम पे चल रहा है। सो अपन को ये तो आना ही चाहिए कि अपन है ना वेबसाइट को डायनामिक जितना हो सके उतना बनाए। तो क्या आना चाहिए? सर जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। तुम्हें कितनी आती है जावास्क्रिप्ट? सर ठीक ठाक 60%। 60% आती है। हाउ डू यू नो तुमको 60% आती है?
सर एक्चुअली है ना कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे, सो उन प्रोजेक्ट्स के अंदर है ना कुछ फंक्शनलिटीज जो कि मैं खुद से कर पाता हूँ, कुछ में है ना प्रॉब्लम्स आती है, सो उसके हिसाब से मैं अपने आप को ना ज़्यादा खराब रेट करना चाहूँगा, ना ज़्यादा बेस्ट रेट करना चाहूँगा, लेकिन सर 50-60% तो आती है सर। 50-60% आती है। ये कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं फ्रंट एंड डेवलपपमेंट पे जावास्क्रिप्ट? यस सर करेक्ट सर। अच्छा, तो जावास्क्रिप्ट आती है। जावास्क्रिप्ट के अलावा और क्या आना चाहिए? CSS अच्छा है और क्या आना चाहिए? सर, HTML CSS और क्या आना Chinese के चाहिए? लिए कोडिंग के अलावा और क्या आना चाहिए? सर, और बेसिक जो अपन को सर द आर्ट ऑफ गूगल करना आना चाहिए सर, क्योंकि है ना वेब के अंदर आप जितने एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो, काफी सारे टूल्स है, आपको अगर गूगल करना ही बेसिक नहीं आएगा तो फिर आप है ना काफी सारे टूल्स आप रह जाते हैं। तो गूगल So, सर्च आनी चाहिए। गूगल सर्च करना एक आर्ट है सर। अच्छा, और क्या आना चाहिए? सर तो अगर किसी को गूगल सर्च करना आता है, CSS आता है, जावास्क्रिप्ट आता है, तो वो अच्छा वेब डेवलपर हो जाएगा? सर अगर वो कुछ प्रोजेक्ट्स बना और उसके बेसिस पर थोड़ा कुछ अच्छा करे तो जूनियर वेब डेवलपर, जूनियर फ्रंट एंड डेवलपर तो बन सकता है सर, किसी के तुम अंडर मेंटरशिप में। आप सही। चलो ठीक है, ओवर टू मयंक सर। So tell me, why should we hire you as a front-end developer? Sir, I have potential to. I am flexible, ready to learn new things. I have specific skill set which is required in the today's generation. I have the. I am flexible. I am a team player, so I can also join as. I can easily work as a team member, also as a team leader. So you said that you have learned new technical skills in the web development field. Yes. Which are those? Sir, in the web development, sir, recently I learned. I'm currently learning, sir, the React.js. What is React.js? So React.js is a framework of JavaScript, which is used to make a single page website. So currently, just like YouTube is using. If you search on the YouTube, the loading bar, the loading bar will not reload itself. Okay, so the content around that searched video will be the same, and the search video will be replaced by the new search video that you have made. Yes, sir. Tell me why. Have you done the experiment that if you are opening your college website in the laptop using the Google Chrome, over the opening the website on the smartphones, the time will be different, the size of the page will be different. How it possible? Sir, sir, it all depends on the CSS. Sir, if we select the width of the window for the specific range, the width of the laptop screen is different, the width of the phone is different. So the web page automatically detects the web width and adjusts the content by itself. So we have to write all the. So whether we have to do it manually, right? And if you don't do manually, then any other option is there or not? Sir, no, sir. If we didn't make it responsive, so the website will remain same as we use it on desktop or use it on phones. Sure. So yes, sir. You said to the Arun sir that the person who is having the good capacity of Googling can sustain in this domain. So might be you are missing one concept, Google Web Lite. Sir, if we use the Bootstrap, then did you hear about Google Web Lite? Google Web Lite, LIGST. Yes, sir, but it will just only show the text of it as a. And what will we do? Suppose if we are opening up, we are developing a web page for any of the organization. Like suppose like for the government organization. So at a particular time, the form will be started. होता ना form भरते हो last date पे hang हो जाती है. Yes, sir. So how you can? What is the possible solution to overcome this problem? Sir, अगर server side से अगर
प्रॉब्लम हो रही है तो फिर अपन फॉर्म की थोड़ा टाइम को अपन लिमिट एक्सीड कर सकते हैं। वो नहीं कर क्योंकि- सकते, वो इट इज फिक्स्ड, वो आप कुछ नहीं कर सकते। चलो आपके हाथ में नहीं है, वो तो सर्वर से आपको यू हैव टू परचेज मोर बैंडविड्थ, बट अब पता चला कि व्हाट इज द रीजन और कैसे। व्हाट डू यू थिंक, हाउ मेनी पीपल्स आर साइमल्टेनियसली लॉग्ड इन ऑन द गूगल एंड सर्चिंग फॉर द their queries? Because the highest bandwidth in this internet technology Yes. is with the Google. That's why it is not Yes. never it's going to be hang. Right? yes sir. Okay. आपने बोला कि आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है. yes sir. You have rated 5 to 6 into JavaScript. How can you handle the session or cookies in the JavaScript? सर आपकी आवाज कट रही है सर। How will you handle cookies and session in JavaScript? सर कुकीज तो सर ना सेशन की लोकल स्टोरेज में स्टोर हो जाती है सर। सर तो लोकल जो ब्राउजर होता है, ब्राउजर के लोकल स्टोरेज में कुकीज और ये सब स्टोर हो जाती है। सो अपन उसके अंदर है ना, अपन यूजर से अपन This यूजर is the functioning of cookies. But I'm asking, how will you implement cookies? Have you overcome these issues when you are surfing with various of websites? They first ask to accept the cookies, then proceed further. yes sir. So you should be aware what is this cookies, how it can be handled in my web. If you are in front-end developer, you should know how to handle this cookies problems. I'm not aware of this. Session. Sir. So I think you have won on this medical QR code generator in the Yes, Sharda sir. University. yes So how you use that QR code reader API? सर फर्स्ट तो सर फर्स्टली हमारा एक प्रोटोटाइप लिए गए थे हम। सो मेरे को उसमें सिर्फ ऐसा QR था कि मेरे को सिर्फ QR कोड समझता है. ओके सर, सो हम क्यूआर कोड के अंदर जो हमको जो टेक्स्ट जो होता था, अपन को जो टेक्स्ट फीड करना है, हम सबको इनपुट्स के थ्रू हम रखते थे और इनपुट के पढ़े बाय यूजिंग गेट एलिमेंट बाय आईडी। सो हम उसके पढ़े हुए इनर टेक्स्ट को लेते थे और है ना क्यूआर कोड के जो सर्वर की एपीआई होती है उसके अंदर हम उसको फीड कर देते थे। हाँ, तो वही API कैसे यूज करते हैं? मेरा क्वेश्चन क्या है? सो अपन उसको फैच करके एपीआई को फैच करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर और फिर उसका अपन कैसे लिंक करते हैं? बस मैं पूछना, लिंक कैसे करेंगे? आपने मैंने मेरा QR जनरेटर है, मेरी API है. हाउ यू विल यूज माय API इन योर वेब पेज इन योर ऐप? बस सिंपल सा कुछ तो इंटीग्रेशन किया होगा ना सर कर रखा है। कैसे? सर एज ऑफ नाउ जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए सर उनके डॉक्यूमेंटेशन में एपीआई इज ऑलरेडी सर पार्ट ऑफ कोड होता है, सो हम उसको यूज करते हैं। चलो मेरे लिए एक सिंगल पेज बनाना है, ओनली सिंगल, है ना? वो QR कोड जनरेट करेगा और उस वेब पेज पे ले जाएगा जिस QR कोड में वेब पेज का एड्रेस डाला हुआ है। कैसे करोगे? फटाफट होता, सिंगल पेज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लिखा आना चाहिए वो बस QR कोड रीडर और कुछ नहीं चाहिए, व्हाइट पेज QR कोड रीडर और स्कैन कर दे, कैमरा स्कैन करे QR कोड को और मेरा जो भी वो डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर दे जिस पेज पे QR कोड का लिंक है। सो सबसे पहले अपन जो डेटा होगा बेसिक्स वो इनपुट्स अपन ले लेंगे और इनपुट फिर उससे जैसे अपन आज सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ, मुझे एक वेब पेज बनाना, उसका कोडिंग भी मैं कर देता हूँ। HTML हेड QR कोड जनरेटर, टाइटल QR कोड जनरेटर, बॉडी स्टार्ट QR कोड जनरेटर। बॉडी खत्म होने से पहले मैं क्या लाइन लिखूं कि मेरा QR कोड जनरेटर चालू हो जाए? एक लाइन पूछ रहा हूँ आपसे, जो भी आपकी इंटरेस्ट की चीज है आप समझो एक चीज को। अगर आप कहते हो कि आई एम ओपन टू ऑल, तो सामने वाले को पहले पता चल जाता है कि मैं इसको बेसिक नॉलेज सबकी पता है। आप 15-20 डोमेन में से कहते हो कि नहीं मैं तो इसी में जाऊंगा, आपने आपके ऊपर बर्डन खड़ा कर दिया इस ध्यान रखना कि भाई ये इस पे जाएगा, मतलब एक एक्सपर्टाइज या मतलब 10 होना चाहिए इसके अंदर। अब आप उसमें अगर 19-20 हो गया तो चांसेस ऑफ रिजेक्शन इसमें।
ठीक है, चलो Thank ऑल you, द sir. बेस्ट। Thank you, sir.